Okay, so let's begin with. So this training program is all about we will focused core technology on the Azure platform, but I will keep guiding you on other platforms as well, just like in GCP, AWS, Oracle Cloud, IBM Software, and so on. So whichever demanded technologies in line with Azure, I'll keep guiding you, keep suggesting you here. Okay, this entire training program would be 50-50 English and Hindi. So to make sure everybody is enjoying, everybody is utilizing this training and whatever knowledge share we are trying to do it here. All right, guys. So let's begin with before beginning with technical discussions. This is my quick introductions. I am basically coming up from a strong network and network security background. My experience is 14 plus, 15 plus years now. Uh, I worked with Cisco and other Saudi Arabian based companies, and right now I'm working with one of the topmost fintech IT company as a senior cloud architect, cloud and security architect. So my primary background is I'm coming from a networking where CCI, security and routing and switching, plus firewalls like Checkpoint, Palo Alto, and Fortinet firewalls. And at the cloud front, I'm specialized specifically into an Azure, which is AZ104, AZ303, 304, and AZ500 certified. I am AWS Solution Architect Associate as well, and just recently I completed my Kubernetes Architect, certifications and training as well. Since we are implementing and we are working on Kubernetes and Google Cloud infrastructure. So this is what my portfolio. Now I will be your instructor and trainer for entire 5 days masterclass session. Okay, I would try to deliver my best based on my experience, knowledge, and 10 plus year teaching experience as well. All right, guys. So moving forward, just a moment. Somebody's trying to ping. Uh, okay, somebody has got. Okay, cool, guys. So let's move now further to. So to begin with this technology, very first and initial phase is we want to clarify what this cloud is. Okay, and where this cloud technologies comes up. सब तरफ cloud की demand है. Everybody is asking for cloud. Okay, cloud technology or cloud computing. What is that exactly? And where that cloud technology comes up from? What are the generations and how that cloud basically emerged into a infrastructure services? Okay. Infrastructure services में cloud कैसे emerge हुआ और कैसे develop हुआ, that is what we are going to discuss.
Okay, so I would like to tell you, I'd like to explain you today whatever cloud technology we see, where it came basically from. Okay. So I will go little backward history and will bring you out how that cloud basically come up. Okay. So let me go with the whiteboard now. Try to understand how that cloud basically emerged. Before cloud technology, how it was looks like. So there was generation 1. Okay. So generation 1 data centers, that means what was generation 1? Generation 1 was a legacy monolith data centers. Legacy and monolith data centers means what? A physical data centers, right? In your data center you have a physical servers. Okay. So let's say you want to maintain 100 servers data center. Your company, small company, taking a small company's example, and you need 100 servers. So you will have physical 100 servers installed into the rack. किसी rack में 100 servers installed है. And in that 100 servers, what additional you need? You need a storage. Okay. Where your entire data is stored. This is a server infrastructure. Now it is depending on the storage. Below that, it is depending upon the network part. Okay. Now, a part of this, you need an applications and licenses. Okay. So all of this, then you need a power backup. Okay. Connectivities, dependent and redundant connectivities, all of these physical things you need. Part of this, you need a physical technical resources also to manage this physical data center. Then you need an hardware support. So let's say कोई एक small company 100 servers का data center build करती है. So, how much is bare minimum cost that particular company has to spend to maintain or to run 100 servers data center? So, take a quick view I have prepared here. So, let's say server cost. Okay, server cost, no one time cost. Let's say if I buy 100 servers, maybe a rack mount servers or maybe a blade servers. If I buy 100 servers, 3 lakh rupees approximately per server into 100, I am spending 3 crore rupees a cost. Now, the moment I buy a server, I need to give an hardware support contract as well, right? Which is AMC contract. So 50K approximately per server per year, AMC cost, and 100 servers around 50 lakh rupees in AMC cost. Now, if I have 100 physical servers, I need an operating system licenses also to be my own. हमारे खुद के licenses हमारे पास होने चाहिए. I would require 100 licenses, which is again 1 crore, 1 lakh rupees, one license. So if you go for Windows 19 Data Center Edition, it is 1 lakh 42,000 rupees license. Okay. Standard editions, if you go 94,000 rupees. So average 1 lakh rupees license cost, 100 servers, you need a 1 CR for licensing. Okay. Storage, at least 100 TB storage you are planning for 100 servers, you need approximately 25 lakh rupees to spend to build that storage. Technical engineers, 100 servers, at least you need 2 system engineers to manage them. Okay. And let's say in one guy is costing you as in salary CTC 10 lakh rupees, at least you have to spend 20 lakh rupees. Cooling cost is most important. When you talk about 100 servers, that means there will be 10 racks. Okay. 10 to 12 racks. Now 10 to 12 racks data center, that means quite decent data center size, where you need to maintain a cooling, at least that cooling 50 or 15 or below 15 temperature you need to manage. It will cost you around 12 lakh rupees, lakh rupees per month. So for a year, at least you need to spend 12 lakh rupees. All right. Electricity cost. Okay. 100 servers electricity consumption also would be quite decent. So approximately a lakh rupees per month, you need to spend around 12 lakh rupees. Power backup, let's say you need to keep a redundant power supply. If your MSCB power supply is not working, you need to have a redundant power supply as well. So that is an additional cost. Internal dependencies. Okay. You have an additional internet connectivities and uptime availabilities and all those things you need to maintain. Whatever internet connectivity you have,
additional some backups you need to keep, and that is an additional cost. Other surprises, you should consider hardware failures, any accidental things happen, server burned out, anything happen. So accidental surprise, you need to consider around 10 lakh rupees. Total approximately, you are spending 6 crore rupees to maintain 100 servers data centers per year. This is your approx cost to have an legacy generation 1, which was till round up before year 2010. So till year 2010, everywhere, or 2008 or 6, that period, everywhere there was a legacy data centers, monolith data centers, where everything was physical, and companies was spending a huge amount to maintain that data center. All right, because there was no options. So this was the end of this monolith era, okay, and hardware dependencies era. This was end, and something new came up into the market. That was your generation 2. So generation 2 was virtualization. Virtualization, that means VMware and Microsoft hypervisor and all of these things came up. So what is that virtualization? Virtualization, that means you don't need 100 physical servers. I will need one or two physical servers, that's it. I will need one or two physical servers. That's it. And those servers will have an high capabilities. Let's say 1000 GB memory. Okay, 1000 GB memories and storage and everything. Okay. Now on top of it, I will install a virtual layer. Okay. Let's say, for example, VMware ESXi. ओके, ESXi VMware का वर्चुअल लेयर बना दिया हमने, और उस वर्चुअल लेयर पर देन आई कैन क्रिएट सो मेनी VMs. I can create hundred virtual machines on that particular layer. So I have only two physical servers, and I have created 100 virtual machines on that particular ESXi virtual layer. That's it, pretty simple. So only two servers where I was needing 100 physical servers. Now I need only two physical servers. What it is costing me, how it is reducing my cost. Let us take an example of this. Let me take an example. Copy, and I'll duplicate this. Okay, so what it is costing me, let us try to understand. So now if this is the case, generation 2 came up, and they brought up a buzz into the market. Hey, why do you spend this much money on your physical data centers? Okay, why not to go for virtual solutions where you will save a lot of cost? So enterprise is asking how I can save the cost. कोई भी पूछेगा कि okay, tell me, explain me how I'm saving the cost. So instead of 100 servers, you don't need 100 servers. Let's say you need only two servers. Okay, so one server, even though costing a 10 lakh rupees, that's a high configuration server, I need a two server which is 20 lakh rupees. That's it. My 3 crore cost suddenly become 20 lakh rupees, which is 90% reduced down. Okay, now my AMC cost, since I have a two servers, I need to spend only two servers AMC cost, which is approximately a lakh rupees. That's it. 50,000 rupees per server AMC cost, it's a lakh rupees. Operating system cost, I will need every same as it is, because let's say even though it's a virtual server, yeah, physical server, operating system license to lagega hi. So that cost will remain same. Storage cost will remain same. Tech engineer cost will be replaced. Okay, now you need you don't need a physical server admin. Instead of that, you need a virtual engineer. Okay, VMware or virtualization technology engineer. So that cost also will remain same. Cooling cost, let's say now 100 server reduced down to 2. So you don't need any additional data centers, additional capabilities. जहां पर आपके राउटर स्विचेस जिस रैक में है, सेम रैक में आप दो सर्वर, दो हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक माउंट सर्वर्स इंस्टॉल कर सकते हो. So your cooling cost will reduce 90%, which will be just 1 lakh rupees. Okay, now my electricity cost will reduce down, which is just 1 lakh. Now my
100 out of 98 servers are gone. 98 hardware server electricity consumption is gone. Only two. Now my power backup, yeah, that will be required. Power supply, you need gensets and anything you need. Your internet dependency, other surprises, hardware related surprises you will not have, because hardware ही नहीं है तो surprise burnout का क्या होगा? Nothing. You have a support, so still we consider one. Now how much it is? This is 1 crore, a bigger chunk, and rest everything entire miscellaneous is a 1 crore. So your 6 crore cost becoming approximately 2 to 3 crore. Okay, your total cost become 2 to 3 crore. So physical legacy data center cost, where we were spending a 6 crore, okay, that is 6 cr become 2 to 3 cr. Okay, my 50% cost is reduced here. That was generation 2, and that generation 2 era was year 2007 to 2012. Very well, 2007 to 2012, this 5 years era was a generation 2 year. इस period में virtualization technologies की demand थी, and one of the top, okay, 84% approximate market was with the VMware. That was the product. Everywhere was in VMware. Just like today, everywhere, everyone wanted to do AWS and Azure. Similar way, everybody wanted to do virtualization, which is VMware. So that was generation 2. Okay, now what was the problem in generation 2? Generation 2 में क्या problem आ गया? Still you have a hardware dependency. और ये hardware आपका कहां पर रखा हुआ है? आपके local premise के अंदर. That means, for example, if your premise has got a problem, connectivity problem, hardware problem, backup problem, reachability problem, okay, all of hardware dependencies still there, failure dependencies still there, okay, you do not have a redundancy. ये fail हो गया तो ये hardware fail हो गया, crash हो गया तो कैसे करेंगे? That's a problem. पूरा building crash हो गया तो कैसे करेंगे? Building में आग लग गई, disaster हो गया तो कैसे करेंगे? That was a problem. ओके, एंड देयर वाज अ डिपेंडेंसी. आपके सर्वर से, आपके फिजिकल ऑफिस से आपकी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है. यू नीड टू मेक श्योर दैट योर सर्वर्स आर 24/7 अप, योर कनेक्टिविटी इज अप, योर पावर सप्लाई इज अप, which is hell of dependencies on service providers. So that was a still challenge to the company. कंपनीज ने यहां पर कॉस्ट तो सेव कर लिया, हार्डवेयर रिड्यूस कर दिए, पावर सप्लाई से कम कर दिया, बट डिपेंडेंसी नहीं हटी. इंटरनेट का यूटिलाइजेशन तो उतना ही है, बट डिपेंडेंसी नहीं हटी. पावर सप्लाई कूलिंग कम हो गया, बट डिपेंडेंसी नहीं हटी. कूलिंग, भले ही आपको कम कूलिंग चाहिए, बट इफ देयर इज नो कूलिंग, योर सर्वर इज बर्नड आउट. If ISP is failed, your service is down. That was a problem. And that was a very, very painful problem, because data is increasing, internet services are increasing, okay, accessibilities is increasing. So this was a bigger chunk. This was a bigger problem. To avoid this problem, third generation came up, my friend. Okay, तीसरी generation आ गई. ये headache हो गया. This was not solving the problem of upgrowing industries. Then third generation came up. Third generation was generation 3, which is cloud computing generation. Okay, so cloud computing generation was the buzz in the market. That was actually introduced in somewhere 2011-12, started hitting widely into the market in 2014-15. 14-15 was the highly kickstart period for cloud computing era. It was available in the market from year 2013 to 14, but 14-15 was the buzz. 16-17 was the hype in this market, and 17 to till 2022-21 was the very, very big hype into a cloud computing generation. What is that, guys? Cloud computing क्या हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट मीन्स द मार्केट ब्रॉट अ सॉल्यूशन कि कंप्यूटिंग को भी हम क्यों नहीं सेल कर सकते. जैसे कि अमेजॉन इज सेलिंग एवरीथिंग. Whatever you want to order, whatever you want to buy, just buy from there.
So Amazon or Microsoft kind of people, they thought of why we cannot sell a servers, why we cannot sell a data center services as well. So let us take an example of Microsoft. Okay, Microsoft Azure. What Microsoft Azure did basically, Microsoft ने क्या किया, 1000 सर्वर परचेज किए. ये एक रैक है, इस एक रैक में लेट्स से 24 सर्वर्स है. सो दे बॉट 1000 सर्वर्स. ओके, 1000 फिजिकल सर्वर्स का एक डेटा सेंटर बना दिया. Don't get into the myth guy, cloud that means something is coming up from the cloud. No, something is coming up from mysterious place. No, क्लाउड मतलब कहां से आ रहा है, अजोर. सबको पता है कि क्लाउड मतलब अजोर, सबको पता है कि क्लाउड मतलब एडब्ल्यूएस. बट व्हाट इज फ्रॉम एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस में कहां से, एडब्ल्यूएस में क्या है, या अजोर में क्या है, या गूगल क्लाउड में क्या है. सो लेट मी ओपन अप दिस एनवेलप गाइस फॉर यू. So this is nothing some surprise. Microsoft has got physical data center where they have physical servers, physical connectivity, physical everything. उसके ऊपर Microsoft ने क्या किया, अपना एक physical layer create किया. Okay, they have created their own physical layer which is hypervisor. Okay, और इस हाइपरवाइजर को एक्सेस करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, सेल्फ सर्विस बना दिया. सेल्फ सर्विस मतलब क्या, एक ऐसा जीयूआई गुई प्लेटफॉर्म बना दिया, गुई प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो और जो भी सर्विसेज चाहिए क्रिएट करो. यू वांट टू टेक अ राउटर, यू वांट टू टेक अ सर्वर, यू वांट टू टेक अ गेटवे, यू वांट टू टेक अ फायरवॉल, यू वांट टू टेक अ एप्लीकेशन, you just select it and create it. Backendly, that Microsoft automatically create that server, virtual servers for you. Okay. तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक हाइपरवाइजर क्रिएट कर दिया और उस एक हाइपरवाइजर पर एक सर्वर पर 100 वर्चुअल मशीन बना दिए. तो 1000 सर्वर पर कितने, तो इन्होंने कितने वर्चुअल मशीन बना दिए ऐसे, सो मेनी, so many virtual machines they have created. Okay, they have created so many means they have created 1000 physical server into एक सर्वर पर 100 is equal to इन्होंने एक डेटा सेंटर. just an example I'm telling you guys. One, so they have created 1 lakh सर्वर, 1 लाख वर्चुअल मशीन बना दी. अब इन्होंने क्या किया, इस डेटा सेंटर को कनेक्ट कर दिया क्लाउड से, इंटरनेट से. Cloud means an internet. They connected this to the internet. All right. This is internet. अब इन्होंने क्या किया, जैसे इसने इसको इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया with the heavy and trusted bandwidth. Okay, heavy and trusted connectivity. They have multiple service providers band and load balancing and capabilities. Okay, now they hired a marketing executive. This is a marketing executive. इस पर्सन को कहा कि आप जाइए NITS ग्लोबल. दिस पर्सन केम अप हियर और NITS ग्लोबल पर ये फिजिकल वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है अभी. ओके, 1 फिजिकल सर्वर, 2 फिजिकल सर्वर, इसके ऊपर VMware पर वर्चुअल मशीन चल रही है. ओके, देन बिलो यू हैव ए नेटवर्क, राउटर्स, स्विचेस एंड योर यूजर्स आर कनेक्टेड हियर. ओके, दिस गाय केम हियर और इस कंपनी को बोलता है कि हे, व्हाई डू यू मैनेज दिस, आप ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चला रहे हो, delete this, remove this, and instead of this I am giving you 100 server from my data center. Okay, what you do is आप यहां से connectivity connect करो, create a secure VPN tunnel between from this to my data center. एक secure VPN create कर दिया यहां से यहां के बीच में, इसके बीच में, and that's it. पहले ये जो यूजर था ये अपना सर्वर एक्सेस कर रहा है यहां से, ओके, अपने लोकल ऑफिस से. अब ये यूजर सेम सर्वर एक्सेस कर रहा है यहां से, उसको एक्सेस मिल रहा है, उसको परफॉर्मेंस मिल रहा है, दैट्स इट. ही डोंट बॉदर अबाउट ये लोकल मेरे बाजू वाले ऑफिस से आ रहा है या कहां से आ रहा है. ही डोंट बॉदर अबाउट दैट. ही नीड सर्वर, ही नीड अ गुड परफॉर्मेंस, दैट्स इट. तो ये सर्वर हटा दो, रिमूव दिस एवरीथिंग एंड
टेक 100 सर्वर्स फ्रॉम माय डेटा सेंटर, ये इसको बोलता है कि ऐसा करो. अच्छा, व्हाई आई शुड बाय, व्हाट इज माय एडवांटेज? देन ही इज सेइंग you need not to pay, no cost, no cost, you need not to pay anything upfront, you pay rent only. Okay, I am giving you one server as a, let's say 5,000 rupees monthly. Okay, so it's for 1 year, 6 lakh rupees, 6 to 7 lakh rupees. Okay, now 100 server, 70 lakh rupees. So I will give you 100 servers in 70 lakh. I will give you 100 servers in 70 lakhs. Now, backup is my problem. You need not to worry about backup. Power, my problem. Connectivity, my problem. Okay, redundancy and DR, disaster recovery, एक भी सर्वर फेल हो गया तो उसको रिकवर कौन कर देगा? मैं करूंगा. यदि ये बैंगलोर का डेटा सेंटर फेल हो जाता है तो उसकी रिप्लिका कहां पर होगी? यूएस के डेटा सेंटर में. यूएस का फेल हो जाता है तो उसकी रिप्लिका कहां पर होगी? किसी तीसरे डेटा सेंटर पर. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस. ओके, दिस इज गुड. फोर्थ एडवांटेज इज, आपको हर डेवलपमेंट सेंटर, हर ब्रांच में अपना डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है. एक डेटा सेंटर क्लाउड पर है, योर 100 सर्वर्स, यू कैन कनेक्ट दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Your one branch is in Bangalore, you just put a router, connect a network, create a VPN tunnel, and same data center is accessible there. So it is portable. You access anywhere from the world. Okay, high availability. You don't need system engineers, you don't need cloud, you don't need virtualization engineers. You need not to worry about power, you need not to worry about hardware, you need not to worry about anything. Everything I take care. Everything Azure will take care. This company is happy. Wow, this is fantastic. Now, जहां पर virtualization में I am spending a 3 crore, my cost has become 70 lakh, or let's say 1 crore. Again, my 66% cost is reduced. Okay, everybody is pretty happy. कोई headache नहीं. You need not to bother about create and use. यदि पहले के लीगेसी में आपको 10 सर्वर चाहिए तो आपको प्रोविजन करना है, लाइसेंस लेना है, VMware के लाइसेंस लेने हैं, हार्डवेयर को अपग्रेड करना है, आपको अपफ्रंट इन्वेस्ट करना होता था. क्लाउड में you need a servers, in next 10 minutes you can make your servers ready to use. You don't need, you just can delete them, you just can release them, and you need not to pay from that moment onward. उस moment से आपका बिलिंग बंद हो गया. आपने जितने मिनट्स, जितने सेकेंड यूज किया, यू ओनली हैव टू पे फॉर दैट. 5,000 रुपीज मंथली आपका सर्वर है. डिवाइड देम इनटू डेज, डिवाइड देम इनटू आवर्स, डिवाइड देम इनटू अ मिनट, डिवाइड देम इनटू अ सेकेंड. आपने 1 घंटा 10 मिनट 15 सेकेंड यूज किया, यू ओनली पे फॉर दिस मच, दैट्स इट. So this is how it is saving a lot of money. अब ये जो डेटा सेंटर अजोर का एग्जांपल मैंने बताया, यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी क्लाउड. लेट्स से ये AWS है, तो AWS का भी फिजिकल सर्वर्स यही है. अब माइक्रोसॉफ्ट ने इंटेल प्रोसेसर यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट के फिजिकल सर्वर यूज किए हैं, वर्चुअल लेयर हाइपरवाइजर यूज कर लिया है. AWS ने VMware का हाइपरवाइजर यूज कर लिया, या उनका अपना खुद का बनाया हुआ हाइपरवाइजर यूज कर लिया. अजोर का GUI कुछ अलग तरीके का है, AWS का GUI उन्होंने कुछ अलग बना दिया. अजोर के पास 1000 सर्विसेज है, AWS के पास 500 सर्विसेज है, गूगल के पास 800 सर्विसेज है. लाइक दैट. टेक एन एग्जांपल, लाइक अ कार मैन्युफैक्चरर्स, राइट? तो एक कार मैन्युफैक्चरर, स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर लाइक मारुति. Okay, Maruti makes a small car with 5 seaters and small size of car. Hyundai make a car, Tata make a car, MG make a car, and so many other companies makes a car. Everybody makes a car. Common principle is same. What is a common principle? It should have a 4 wheels. It should have a 5 seaters. It should have a steering. It should have a power steering or whatever. That's it. These all are the common infrastructure or common architecture. बट फिर भी अलग अलग कंपनियों में डिफरेंस क्या है? उनके फीचर्स, उनके परफॉर्मेंस, उनकी कॉस्ट, उनकी रिलायबिलिटी, ये फीचर्स है. बस सेम इसी तरह से एवरी क्लाउड प्रोवाइडर्स का प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइमरी प्रिंसिपल इज सेम. दे हैव अ फिजिकल सर्वर्स बिहाइंड, उसके ऊपर हाइपरवाइजर का एक लेयर है, और उसके ऊपर फिर सारी वर्चुअल सर्विसेज क्रिएटेड है. ओके, फिर GUI सबके अलग अलग है.
उसकी फीचर्स सबके अलग अलग है, परफॉर्मेंस किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी के पास कोई सर्विसेज ज्यादा है, किसी के पास कोई सर्विसेज कम है। अश्योर के साथ पास एडी इंटीग्रेशंस और बिजनेस एंटरप्राइज लेवल की सर्विसेज ज्यादा है। ओके, एडब्ल्यूएस के पास एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्विसेज ज्यादा, लाइक दैट, somebody has something. So that way, every clouds are differing to every cloud providers are differing in terms of services, in terms of performance, in terms of some other things, but the primary principle behind is the same. All right, everybody has got a physical infrastructure, on top of it layer, virtual layer, उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ सर्विस गुई, और उसके ऊपर फिर सारी वर्चुअल सर्विसेज क्रिएटेड है. Okay, this is a common principle for every cloud provider, and this is a cloud basically. So you are accessing virtual services from some physical data center only, but वो physical data center और वो services वो provider manage करता है. You need not to bother about. Take an example. You are using a Gmail email solutions you are using, right? Do you bother about which server? Do you bother about who, whether they are taking backup ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सर्वर को पावर सप्लाई है कि नहीं है? Do you bother about? No, you just use it, and backendly they are taking care about everything. You just use, pay for the rent, whatever services you are using, and they are taking care about your entire services. They are taking care everything. Backup, redundancies, connectivities, licensing, everything. Everything is included into your rent cost. You got me, guys. So this is basically your cloud, in irrespective whichever cloud provider is. So this is a generation which is going on since year 2013, 12, 13 to till now. Now, cloud computing generation is about to go now, about to die. Now, the fourth generation today is containerizations. Coming back to this. So fourth generation is, अब इसने क्लाउड जनरेशन ने, जनरेशन 3 ने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. Listen, guys, problem will never solve. Problem is all about your demand. Problem is all about your expectations increasing day by day. ओके, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है. जनरेशन 4 में, 3 में प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं. ऑल द प्रॉब्लम इज सॉल्व. बट नाउ एक आपको फीचर्स और कैपेबिलिटीज मिल गया, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आपकी और कुछ नई एक्सपेक्टेशन आ गई, उसके लिए आपको एक नया सोल्यूशन चाहिए. उसके बाद और आपकी कुछ नई एक्सपेक्टेशन आएगी, आपको और कुछ नया सोल्यूशन लगेगा. सो दिस इज व्हाट. सो एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड कम्स अप, एंड देन द न्यू सॉल्यूशंस अराइजेस. न्यू सॉल्यूशंस एक्चुअली born. So that is why generation 4. So I will tell you what is the problem in generation 3. Generation 3 में problem क्या है? You have a virtual machine based infrastructure. Virtual machine based infrastructure मतलब एक virtual machine कैसे काम करता है, ये हम पहले समझते हैं. ओके, सो क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? एक फिजिकल सर्वर है, जो अभी हमने समझा. मैं हजारों सर्वर्स को एक एक सर्वर में एग्जांपल देकर समझाऊंगा. ये एक फिजिकल सर्वर है. इस फिजिकल सर्वर पर वर्चुअल लेयर है. आई विल राइट लाइक अ वीएल, वर्चुअल लेयर, और इसके ऊपर आपकी एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है. ये आपका वर्चुअल सर्वर है, वीएम. अब कोई वर्चुअल मशीन कैसे बनती है? एक वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है? योर वर्चुअल मशीन हैज गॉट 3 कंपोनेंट. पहला कंपोनेंट होता है ओके, सो योर फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट होता है ओएस कर्नल. OS kernel, that means your operating system kernel. Okay, your base operating system kernel, whether it's a Microsoft or Linux or Ubuntu or so, or anything, novel netware or HPUX or any operating system. Operating system आपका लगेगा. Let's say your server has got 16 GB memory. Your operating system will eat, let's say, 4 GB. How much remaining? 12. उसके बाद एक वर्चुअल मशीन में क्या होता है? डिपेंडेंसीज, मतलब योर रन टाइम. रन टाइम में क्या क्या आता है?
आपके सर्विस पैक्स, आपके पैचेस, और बाकी जावा रन टाइम और डिपेंडेंट डिपेंडेंट सर्विसेज। तो ये आपके रन टाइम्स हैं। योर रन टाइम इज ईटिंग लेट्स से 2 GB। ओके, सर्विस पैक्स एंड ऑल, पैचेस एंड ऑल। अब इसके बाद है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को अब आपको 16 GB के सर्वर में से आपको अब आपको एक्चुअली 10 GB का मेमोरी, 10 GB का रिसोर्स आपके एप्लीकेशंस को मिल रहा है। और ये कहानी है हर एक वर्चुअल मशीन। आप यदि 10 वर्चुअल मशीन बनाते हो तो 10 वर्चुअल मशीन में सर्वर होगा, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होगा, रन टाइम्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। यदि आपकी आज की कॉम्पिटिटिव हाई परफॉर्मिंग जनरेशन में यदि मेरा एक सर्वर चल रहा है और एक सर्वर लोड नहीं ले रहा है, और एक सर्वर को लोड ज्यादा हो गया, तो मुझे 1 से 10 सर्वर बनाने हैं, तो उसको मुझे स्केल अप करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, या एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा 1 से 10 सर्वर की कॉपी बनाने के लिए। बट उस 1 घंटे के लिए मेरा मेरा सर्वर, मेरा वेबसाइट, मेरा बिजनेस चोकअप हो जाएगा। लेट्स से दिवाली का सीजन आ गया और अमेजोन पर सडनली परचेसिंग की रिक्वेस्ट बढ़ गई है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट स्टार्टेड हिटिंग इन इन एन पीक। तो क्या हुआ, बिजनेस डाउन हो जाएगा। सो 2 घंटे के लिए डाउन होना, 2 घंटे के लिए वो अप ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या फायदा। These all are the problems. Uptime, downtime is a problem. OS dependencies is a problem. These all are the problem. उसके अलावा डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, आगे मैं बताता हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरेशन 4 इंट्रोड्यूस हो गया, विच इज कंटेनराइजेशन माय फ्रेंड्स। कंटेनराइजेशन क्या है, और कंटेनराइजेशन के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे कि यू कैन हैव अ कुबरनेटीज, this is Kubernetes. Okay, this is a Docker. This is an LXD. This is Linux Docker. This is Podman, and there are many more other competitors as well. इनमें से जो भी आपको चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। डॉकर कुबरनेटीज वर्किंग टुगेदर, और पूरे वर्ल्ड का 73% मार्केट डॉकर और कुबरनेटीज के पास है। बाकी के परसेंटेज में 10-15 कॉम्पिटिटर्स है। सो दिस इज अ टॉप डिमांडेड इन कंटेनराइजेशन। माइक्रोसॉफ्ट भी है, माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर्स भी है। व्हाट इज दैट एंड व्हाई इट इज बिकमिंग पॉपुलर, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। I will tell you little detailed example to make you understand very very clearly. जितनी ज्यादा आपकी फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको क्लियर दिख रहा है कि अच्छा ये इसलिए है, अच्छा ये है। रेस्ट ऑन टेक्नोलॉजीज यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली लेटर ऑन। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ये कंटेनर क्यों बना। कंटेनर इसलिए बना कि ये आपकी एक कंपनी है। ओके, दिस इज कंपनी लेट्स से NITS ग्लोबल, और इस कंपनी में इसके अपने फिजिकल सर्वर्स हैं। ओके, फिजिकल सर्वर्स हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड एग्जांपल पर मैं लेकर चलता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये 100 सर्वर्स फिजिकल सर्वर्स है। इस कंपनी ने डिसाइड किया कि आई वांट टू टेक माय इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अज्योर। इन 100 सर्वर्स पर इनकी एप्लीकेशन चल रही है। लेट्स से इमेजिन करो कि ये कंपनी है, लेट्स से मिंत्रा और फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशंस और कई सारी एप्लीकेशन चल रही है फिजिकल सर्वर्स पर। इन्होंने डिसाइड किया कि हे, वी वांट टू गो टू अज्योर, अज्योर पर माइग्रेट करते हैं। इन्होंने क्या किया, अज्योर क्लाउड को चूज किया। ये अज्योर है, और माइग्रेशन के लिए एक कंपनी को हायर किया। तो अब मुझे ये 100 सर्वर्स और 100 सर्वर्स को अज्योर पर मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को भी कस्टमाइज बनाना पड़ेगा। अभी मेरी एप्लीकेशन कहां पर चल रही है, फिजिकल हार्डवेयर पर, फिजिकल हार्डवेयर पर। इसको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाने के लिए कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ स्लाइट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कुछ एप्लीकेशंस में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वो सारा कस्टमाइज डेवलपमेंट करने का मुझे कॉस्ट है। मुझे अज्योर पर लेकर जाना है,
तो मुझे क्या क्या कॉस्ट आ रही है? माइग्रेशन कॉस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। माइग्रेशन कॉस्ट, उसके अलावा रीडेवलपमेंट कॉस्ट, एप्लीकेशन को थोड़ा स्लाइटली रीडेवलप करना पड़ेगा। ओके। तीसरी कॉस्ट आपको क्या आएगी? अज्योर कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट है। 100 सर्वर को आपको क्लाउड पर ले जाने के लिए आपको लेट्स से पहली बार फर्स्ट टाइम आपको 1 CR की कॉस्ट खर्चा आ गया। उसमें से 50 CR 50 लाख अज्योर का है, 50 लाख आपकी एप्लीकेशंस को रीडेवलप और रीट्यून अप करने के लिए आपने ये बना लिया। आपने डेवलप किया, 6 महीने का टाइम रीडेवलपमेंट और माइग्रेशन में लगा और आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अज्योर पर आ गया। इट इज वर्किंग फैंटास्टिक। अज्योर पर माइग्रेट हो गया, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, अज्योर पर या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पर माइग्रेट हो गया। इट इज वर्किंग। ओके, डन। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? आफ्टर आफ्टर ए ईयर या 2 साल के बाद इस कंपनी को लगता है, एनआईटीएस ग्लोबल को लगता है कि हे, अज्योर इज कॉस्टली टू मी। यही सर्विसेज, इससे ज्यादा सर्विसेज और यही सर्विसेज मुझे, आई एम स्पेंडिंग, आई एम गिविंग 50 लाख टू अज्योर। नाउ AWS is offering me in 30 lakh rupees. I want to take it up to Azure, AWS. इसने डिसाइड किया कि मैं अपने ये सर्विसेज कहां पर लेके जाना चाहता हूं? AWS पर। ओके। अच्छा, तो ये जो डेटा सेंटर इंजीनियर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है, ये अपने सीईओ के पास जाता है और बोलता है कि हे, व्हाई नॉट टू टेक दिस ऑन AWS? ओके, अभी यहां पर वी आर पेइंग 50 एंड AWS will give me in 40. We will save 10 lakh rupees. Why not to take it on AWS? The CEO will ask, okay, we have to migrate this to AWS. How much will cost? क्या मुझे AWS के अकॉर्डिंग उन सारी, अभी तो ये सारी एप्लीकेशन रीडेवलप्ड हो गई है अज्योर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। ओके। अब आपको AWS पे लेना है तो AWS की सर्विसेज अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ अलग है। तो मेरी एप्लीकेशंस को वापस से रिकस्टमाइज करना पड़ेगा AWS के अकॉर्डिंग। तो AWS के अकॉर्डिंग करना है, अगेन 50 लाख रुपया। फिर माइग्रेशन कॉस्ट अगेन 50 लाख रुपया। फिर 10 लाख को सेव करने के लिए आई नीड टू स्पेंड अनदर 1 करोड़। एंड मेरा माइग्रेशन टाइम, डिपेंडेंसीज, उस टाइम पे सर्विसेज हैम्पर होगी, सर्विसेज अनअवेलेबल होगी, वो सब रिस्क। This CEO will kick his ass, get lost from here, right? And never go. क्योंकि ये फंस गया है अज्योर पर। एक बार डेवलप हो गया, वापस से उसको रीडेवलप करना, वापस से उसको रीमाइग्रेट करना, वापस से ये करना, इट्स अ बिग चैलेंज। Nobody will dare to take this at least 10-20 years. Nobody will do that. तो ये क्या होता है, एक बार आप एक क्लाउड पे चले गए, उसके अकॉर्डिंग आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिजाइन कर दिया, आप कुछ साल के लिए फंस गए, फिर आपको वही चलाना है। और वर्चुअल मशीन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बना? कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन मतलब क्या होगा कि हम अपनी सर्विसेज को क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन के फॉर्म में नहीं डेवलप करेंगे, वीएम कंपैटिबल नहीं डेवलप करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशंस को कंटेनर के फॉर्म में डेवलप करेंगे। अब कंटेनर कैसे वर्क करता है यहां पे समझाता हूं। कंटेनर वर्क ऐसे करता है कि आपका ये फिजिकल एक सर्वर है, अज्योर का या एडब्ल्यूएस का, किसी का भी एक फिजिकल सर्वर है। इस फिजिकल सर्वर पर क्या रहेगा, एक कंटेनर, एक कोर कर्नल होगा। ओके, एक कर्नल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे, और अब इसके ऊपर हम क्या रन करेंगे, कंटेनर रन करेंगे। कंटेनर मतलब ये एक वर्चुअल मशीन के टाइप का ही होता है, बट ये कंटेनर, इसमें कर्नल नहीं होगा। ओके, इसमें होगा एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसी ये चलेगी। और ये जो कर्नल जो यूज करेगा वो कहां से करेगा, यहां का कर्नल यूज करेगा। और ये है कंटेनर। अब इसका एडवांटेज क्या है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन कंटेनराइज बेस्ड बना ली है, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशंस मैंने डेवलप कर ली है। नाउ दिस कंटेनर आई विल जस्ट टेक इट अप एंड आई विल रन ऑन Azure.
अब इस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी उसके साथ है, ये एप्लीकेशन कंटेनर में है और उस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी उसके साथ ही है, उस कंटेनर में है। क्लाउड प्रोवाइडर पर ये अजोर है, अजोर के हिसाब से मुझे कोई डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, मुझे कंटेनर बनाना है। और ये कंटेनर इजी अडॉप्टेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। अजोर पर मैंने रन कर दिया, इसको एक कर्नल चाहिए, कर्नल दे दिया, ये रन हो गया। ओके, ऐसे करके मैंने 100 सर्वर के बजाय 100 कंटेनर क्रिएट कर दिए। नाउ कंटेनर रिप्लिकेशन हैपन्स 100 टाइम फास्टर। एक वर्चुअल मशीन से 10 वर्चुअल मशीन स्केल अप यदि 10 मिनट में होते हैं, तो एक मशीन से, एक कंटेनर से 10 कंटेनर्स, इट विल बी इन एन 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट टाइम। इट इज वेरी फास्टर, क्योंकि इसमें कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आपका ये बेस कर्नल चल रहा है, यहां का यूज करेगा, सिर्फ डिपेंडेंसीज एंड एप्लीकेशन, दैट्स इट। और इसमें अपना सिर्फ कोर कोर कर्नल होगा छोटा, जो इसको इससे कनेक्ट करेगा, दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ today I decided I don't want to run on Azure. I will take my containers and lift into the AWS in an 1 hour. 100 servers I can move, 100 containers I can move to one cloud to the other cloud in just in 1 hour or less than 1 hour. There is no dependency on cloud. No dependency on cloud. It just a container. कंटेनर कैरी इट्स ओन डिपेंडेंसी टुगेदर। एक बार आपने कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन रन कर दी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उसको चलाओ, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की सर्विसेज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इट कैरी इट डिपेंडेंसी टुगेदर। ये अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ कैरी करता है, क्लाउड प्रोवाइडर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। एक बार डेवलप कर दिया, अजोर पर लेके चले जाओ, नेक्स्ट डे यू डिसाइडेड माय 100 सर्वर आई डोंट वांट टू कीप ऑन अजोर, आई वांट टू टेक इट अप ऑन जीसीपी, यू जस्ट लिफ्ट इट इन 1 hour एंड यू विल बी एबल टू मूव। राउटिंग कर दिया, नेटवर्क चेंज कर दिया, वीपीएन रिबिल्ड कर दिया, मूव कर दिया एडब्ल्यूएस पर, एक दिन के डाउन टाइम में, सैटरडे संडे में आपने पूरा डेटा सेंटर मूव कर दिया एक क्लाउड से। इसका एडवांटेज ये फास्ट परफॉर्मेंस है, डिपेंडेंसीज नहीं है और लाइट वेट है। इसमें हर सर्वर पर कर्नल नहीं है, तो एक कंटेनर को मैंने 16 GB दिया, तो 16 का 16 इस कंटेनर को मिल रहा है, कर्नल ओएस कंज्यूम नहीं कर रहा है। जहां पर मुझे 100 सर्वर के लिए 100 कर्नल रन करने पड़ते थे, अब 100 कंटेनर के लिए सिर्फ एक कर्नल रन करना पड़ रहा है, तो मेरे 99 कर्नल का रिसोर्सेज बच रहा है ना। एक कर्नल 4 GB कंज्यूम करता था, तो 99 कर्नल्स के रिसोर्सेज बच गए, फास्टर। ओके, बूट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्नल ऑलरेडी रनिंग है, तो बूट होता ही नहीं, जैसे ही पावर ऑन किया, कंटेनर ऑन, एप्लीकेशन इज ऑन, like that, your OS is on, like that. So faster, very very faster. This is a container, guys, and this is called microservices. Okay, microservices, that means it will automatically scale up whenever needed, automatically scale down as per the policies what you set, as per the rule what you set, and you will, your cost again, आपकी cost भी reduce हो जाएगी, क्योंकि आप ये खुद आप अल्गोरिदम पे काम करेगा कि कितने की जरूरत है उतना ही चलाएगा, ऑटोमेटिकली कम ज्यादा करते रहेगा। सो कॉस्ट पर भी इंपैक्ट होगा, परफॉर्मेंस भी हाई रहेगा, और इट इज कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी नाउ। Okay, so that's the containerization, my friend. This is generation 4. Everybody started moving to containerizations now today. Every company who is on cloud computing, जिसका infrastructure cloud computing पर है, everybody is moving to a containerizations now today. ओके, कंटेनराइजेशन इज एन ओपन सोर्स सर्विस। ये एडब्ल्यूएस पर भी, क्लाउड खत्म नहीं हो रहा है, कंटेनर भी क्लाउड पर ही रन होगा, अज्योर एडब्ल्यूएस जीसी पर ही रन होगा, बट नो वर्चुअल मशीन्स नाउ, इट इज अ कंटेनर। अब कंटेनर सर्विस आप कौन सी यूज करना चाहते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। यू यूज कुबरनेटीज, डॉकर, LXD or Podman or many other. Okay, so many other containerizations, container providers are available, guys. All right, this is generation 4. So generation 4 is already heated out. Top companies already adopted, already migrated their data centers and their services to the Kubernetes. In next 2 years time, 100% migrations would be done on Kubernetes. This is the demand, this is the generations, guys.
Okay. And out of this, Docker and Kubernetes is the number one, having the major stack in the market, and rest all other players are on the 30% market stack. All right. So these all are four generations what we were discussing today. Okay. So this is what I was talking about, how it is. So again, coming back to this is your monolith data center. ओके, ये ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है जिसमें फिजिकल हार्डवेयर्स लगते हैं, नेटवर्क्स लगता है, स्टोरेज लगते हैं, और उसके ऊपर फिर आपकी वर्चुअल लेयर, और वर्चुअल लेयर के ऊपर एप्लीकेशंस चलती हैं. ओके, whereas when we talk about cloud computing, where you have a cloud physical data center is there on the cloud, but that is managed by Azure, you need not to bother about. You just create virtual machines or applications whatever you want and start using it. You need not to bother about anything. तो पहला पहला कंपैरिजन क्या है? योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड लॉट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट टू बिल्ड. ओके, आपको 10 सर्वर चाहिए तो पहले आपको बाय करना है. अप फ्रंट यू नीड टू इन्वेस्ट मनी फर्स्ट, देन यू विल गेट अ डिलीवरी, देन यू विल हैव दिस. So today you decided to have a 10 servers, it will take a month to have it. Okay, you need to buy hardware up front. It include lot of investment, guys, and there is lot of setup required. जैसे ही servers आ जाते हैं, hardware installation, hardware connectivities, operating system, virtual layer, lot of setup and configuration is required. Then there can be a lot of maintenance cost involved. Wherever your physical things comes up, hardware physical data center में बहुत सारा maintenance और dependencies इसमें आ जाती है. Whereas in virtual, whereas in cloud, okay, no initial cost required. Okay, need not to invest anything upfront. आपको पहले कुछ नहीं. You just create your account, create your subscription, and create your services and start using it. Once you use it, then you pay later on. Okay, you pay like weekly billing or monthly billing after use, not before use. Okay, you use the services and forget about your infrastructure management. Backup कौन लेगा, license कौन, power supply, connectivity, backup power supply, backup internet, connectivity loss हो गया, ISP नहीं है. No, you need not to bother about that. Will be 100% uptime. 100% uptime. So कोई भी provider, yes, Vinod, do you want to say something? Okay, so that is right. You can terminate your services anytime. Whenever you want, you can terminate. आपने 100 servers create किए हैं, you don't need 10 servers for a 1 month. You just can terminate them and your billing will stop for those resources. Okay. A part of this, Azure has got today 1,000 plus services. Anything a enterprise business required, एक enterprise business को जो भी services required है, almost everything is available. All the services and everything is available to use today. You just select and use it. All right, so this is virtual infrastructure, guys. This is what a cloud technology and cloud infrastructure. Now we will move ahead with the models and all. Cloud model, and tomorrow's class I will show you the dashboard and how we can create a services slightly in a few clicks, how we can make a service running, how you can create your account, and what is that platform, what is that model, how to choose the right services, how to configure, how to use them easily with the easy steps, that we will see tomorrow. Okay, so now question and answers. Okay, just one moment, I'm just unmuting you guys. Hmm. Okay, good to go. I'm open for question and answers. One by one, you guys can unmute yourself and you can ask me a questions, whatever you have. Hello. Tomorrow, I'll share you the course content, what we are going to what we are going to learn in this.
5 days class. All right, guys. Yes, go ahead. You said that if we can move from one cloud to other cloud. Mm-hmm. Okay. So, is there any mechanism or any tool available in market like we Of have course, for migration, different right? tools? So there are No, no, tens no. of tools are Question is available to not the migrate. migration. Mm-hmm. Question is if some customers say that you should be automated. Suppose there is a sale going on Mantra or Yeah, sale going on Azure. So if yes. different platform it automatically measure which one is cheap, which cloud is cheap, and then it auto migrate your data center. So you can always get the minimum cost. Yeah. That you can do it. That you can do it. So see, for optimizer or cost calculator, every cloud provider has their own, right? बट कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर को रेकमेंड नहीं करेगा कि ये मेरी सर्विस से ज़्यादा सस्ती AWS की है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए थर्ड पार्टी कॉस्ट ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल है। So you need to have a third party product where you will having comparison services, और services comparison करके वो that third party will tell you triggers that they will give you an alert, they will give you a notification, and then accordingly you can plan your services. Okay, you can plan migrations automated as well. Okay, but आपका ये तो पाँच क्योंकि रुपया पैसे कमाते थे करेक्ट करेक्ट हाँ, आपकी कोई सर्विस 5 रुपए से सस्ती है तो उसके लिए माइग्रेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइग्रेट के लिए आपको आपकी कुछ डिपेंडेंसीज होगी, सर्विस अप्रूवल्स होंगे। ओके, एप्लीकेशंस की कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए सर्विस डाउन टाइम होगा, नेटवर्क लेवल पर आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। तो माइग्रेशन नहीं है कि आपकी, मतलब आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर माइग्रेशन फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, वी डोंट डू ऑटोमेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट फैक्टर। ओके, migrations you can do through the script, you can do through automation, but not just in cost fluctuations, nobody does like that. ओके, बट कॉस्ट के बेस पे आप डिसीजन लेते हो तो वो एक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन होता है, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इन्वॉल्व डिसीजन होता है, बट यस, दैट इज ऑटोमेटेड पॉसिबल। ओके यस, यस, एनीबडी एल्स गाइस, anyone else has got a question? Yes, sir, I'm audible. Yes, Rakesh, I can hear you. Yes, sir. Actually, I am very possible. Actually, my background is network and security domain. Mm-hmm. So, if I move to, is it any benefit for this is for in my future, or if I want to move my career, then how can I proceed for it? Okay, all right, so your background is from network, right? Correct, correct. Routing and Okay. switching. So routing and switching, of course. See, Azure Cloud, Azure Cloud has got an infrastructure. Now you get into the administration and then you choose, right? You want to go into a network, you want to go into to the network and communications, you want to go into a cloud security, you want to go into a cloud big data, you want to go into a cloud architecture, compute part. That is all. You want to get into the operation, you can choose later on your specialization. So of course, बिना networking के cloud चलता है As, क्या? as So you as you said, there is a version 1, 2, 3, and right now it's 4. So it's not directly, version, it's not version, it's a sorry, generation. sorry, Which operating generation. system you are using today? Which operating system you are using today? Windows 10? Yeah, 11. तो उसमें 11, तो is it generation wise upgraded or not? Yes, yes. Then, और वापस 98 ही Yeah, होता आपके पास, तो फिर क्या होता? डिमांड के correct. And अकॉर्डिंग ये no, इंक्रीज होगा ना। मुझे अगर entry करना है, I am having 5 to 6 years of experience right now in राइट this राइट domain. राइट, नो तो वरी, सो अगर move दैट, करना है, then yeah, या दैट्स फाइन, दोस जनरेशन विल कीप मूविंग, दैट्स फाइन। इसका मतलब आप उस ट्रैक से, उस करियर से आउट नहीं होते हैं कभी भी। जनरेशन ऑलवेज विल कीप अपग्रेडिंग, एंड along with that generation you are upgrading, right? आप भी अपग्रेड होते चले जाओगे। अब देखो, यदि आप क्लाउड correct, पर, correct. But अज्योर पर, direct these companies are higher this because they will consider me as a fresher or what? If I want to entry inside of the like generation 4, so I get Mhm. the chance and I need to first entry That's fine. hands-on That's on fine. Your generation 3. past experience would be considered. Of course, your past networking experience would be considered, and new technology experience also would be considered. All right. So नई टेक्नोलॉजीज और पास्ट एक्सपीरियंस दोनों कंपैरिजन होगा, आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस
or where you're fitting into the budget, where you're fitting into the company's requirement, you'll be hired. Don't worry about the job part. हर जॉब कुबरनेटिस की जनरेशन है या क्लाउड कंप्यूटिंग की जनरेशन है, तो एवरी जॉब डजंट रिक्वायर्ड एन आर्किटेक्ट ओनली. There is a cloud network, there is a cloud Mhm. juniors, cloud admin, cloud support engineers, all levels always are there. It is not like there is only one expert level available. No more other level. All the levels are available. You get fitted into some of the other role. Okay, so do not worry about that. Okay, so I'll get the chance to work on directly if I want to learn, like become my career. So And of directly course, I you need can. to Yeah, yeah, yeah. third or fourth You need to begin generation from manager. third. You need to begin from third. You cannot go for fourth generation directly. क्योंकि फोर्थ जनरेशन की Okay. डिपेंडेंसी जनरेशन 3 है. कुबरनेटीज इज नॉट समथिंग everything is new. It is all on the cloud platform. It is working on the same cloud platform. Okay, it's a new service. All right. Yeah. Thanks. Okay. Mhm. हेलो. Yes, who is that Punit? यस सर. Yes, Punit, go ahead please. सर एक क्वेश्चन कि ये जो Mhm. कोर्स है ये ओनली एज्योर एडमिन के लिए है या फिर और भी कुछ एज्योर डेवऑप्स लाइक. Azure infrastructure architecture के लिए है. DevOps is all about 50% development role basically. So this is for infrastructure. ओके ओके सो Okay. एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन इज द परफेक्ट प्रोफाइल फॉर दिस कोर्स. Exactly. Azure administration and Azure architect. ओके ओके ओके. Yeah. एंड सर अभी मुझे 3 मंथ का एक्सपीरियंस हुआ है एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर. Great, great. So you can inline with your cloud computing, Azure admin, Azure architect. इसमें आप इनलाइन हो सकते हैं. और जब तक आप ये कंप्लीट करेंगे ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज, तब तक आपका 6 months to year एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड यू विल हैव good opportunities in the market. ओके 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 You will have a fantastic opportunities. ओके ओके. एंड सर फी स्ट्रक्चर फॉर दिस. That's admin people will help you out. ओके 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 I'm a core technical trainer. So ओके. reach out to the person who sent you the link. Okay. या श्योर श्योर. All right. All right. थैंक यू. Thank you. Sir, I have one little query Yes, about the Abhishek, go ahead. containerization and Mm-hmm. the cloud. Mm-hmm. Okay. Um, जैसे कि आपने बोला कि कंटेनराइजेशन में जो भी है मतलब डेटा लाइक दैट वो वर्चुअलाइजेशन पूरा कंटेनर में आ गया है इज इट Right, right, right. आ गया है मतलब इनके टेक्निकली मतलब क्या हो रहा है मतलब वहां पे कोई वो कंटेनराइजेशन का ऐसा कोई टूल है या कोई एप्लीकेशन है जो वो Contain पूरा वर्चुअलाइजेशन बना देता है देन हम उसके ऊपर जो भी अपना सब कुछ लोड कर देते हैं इंस्टॉल कर ये मतलब डेटा ट्रांसफर हो जाता है और वो विद इन टाइम में लाइव हो जाता है ऐसा कुछ टेक्निकली है मतलब है ये कंटेनराइजेशन है क्या इन शॉर्ट मतलब okay. ये जस्ट लाइक 90% ऑलमोस्ट वर्चुअलाइजेशन. या नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. कंटेनर हाँ. भी एक वर्चुअल मशीन की तरह ही है. ओके. कंटेनर भी ओके. एक वर्चुअल मशीन की तरह ही है. हाँ. लेकिन उसमें क्या है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ये एक ओके. कॉमन कर्नल को यूज करता है. चलिए अभिषेक, मैं इसको और सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. बाकी सब हम्म. लोगों को भी ये दिक्कत होगी तो उसको हाँ ये हम ये सबको तो समझ सभी में आ को दिक्कत जाएगा. होगी बट इसने क्वेश्चन किया राइट, नहीं राइट, है. राइट, नो हाँ प्रॉब्लम. ये बहुत ग्रेट. बड़ा मतलब ये तो बहुत बड़ा टास्क है या मतलब पूरे गुड कोर्स की चीज जाननी है. गुड हाँ. टू रेज दिस क्वेश्चन अभिषेक, आई अप्रिशिएट. हाँ. ओके, लेट मी टेल यू. ओके. अब बहुत ही जनरल एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछूंगा और उसके ऊपर आंसर करूंगा. राइट. सब लोगों ने बस देखी है. राइट. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबके दिमाग में बैठ जाएगा. ओके. बिल्कुल खान सर की तरह. सब लोगों ने बस देखी है, बस. हम्म. आपने ही यस देखी सर. है लगता है. ओके, सब Yes, लोगों ने yes. बस देखी है. माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ड्रा. ओके, दिस इज अ बस. ओके. ये बस है. ऐसी आपके पास 10 बसेस हैं. ओके, मैं 10 ड्रॉ नहीं करता हूँ, 3 ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, समझ लो कि इंटू 10 10 बसेस हैं. 10 बसेस को चलने के लिए क्या क्या चाहिए? 10 बसेस में 10, इसमें अपना खुद का इंजन, इसमें खुद का इंजन, इसमें खुद का इंजन. राइट. इसमें एक इंडिपेंडेंट ड्राइवर, इसमें इंडिपेंडेंट ड्राइवर, इसमें इंडिपेंडेंट ड्राइवर. सारे 10 बसों में 10 ड्राइवर, 10 इंजन, 10 पेट्रोल कंजम्पशन.
सब कुछ 10। ओके, कॉस्ट बढ़ गया। अब इसी चीज को रिप्लेस कर दिया गया है इसके साथ। नाउ आई हैव 10 बसेस के जगह पे मैंने 10 डिब्बों का एक ट्रेन क्रिएट कर दिया, ट्रेन। हम्म। ओके, ये 10 ओके। डिब्बों की ट्रेन है। अब मुझे 10 डिब्बों की ट्रेन चलाने के लिए क्या 10 इंजन चाहिए रहते हैं? आई हैव ओनली 1 इंजन, नो, एक इंजन। नॉट रिक्वायर्ड दिस इंजन, नॉट इंजन डस ड्राइवर। एग्जैक्टली। इट्स ओके, कन्वर्टेड तो इन एक ड्राइवर, ट्रेन। एक इंजन, एक ही इंजन है, एक ही ड्राइवर है, लेकिन ये 10 अलग अलग डब्बे हैं, बस इतने बड़े ही, इसमें भी सीटिंग कैपेसिटी उतनी ही है, 10 लोग चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इंजन चला रहा है। अब इस 10 लोगों में अलग अलग सर्विसेज भी है, अलग अलग सीटिंग है, अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग कैपेबिलिटी, मतलब ये 10 वर्चुअल मशीन्स है, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहां पर 10 वर्चुअल मशीन्स है, ये कंटेनर्स हैं, इसमें अलग सवारी है, इसमें अलग सवारी, मतलब अलग अलग कंटेनर है, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग सर्विसेज रन हो रही है, बट कर्नल एक है, ओएस एक है। आपका परफॉर्मेंस हाई हो जाएगा, कंजम्पशन लेस हो जाएगा, और डिपेंडेंसी फर्स्ट क्लास। ओके, नो डिपेंडेंसी, दिस इज अ कंटेनर। अब आपके पास ये धुएं वाला पेट्रोल वाला इंजन है अज्योर, लेट्स से एडब्ल्यूएस, आपने इस इंजन को हटा दिया, इलेक्ट्रिक वाला इंजन लगा दिया, ये इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको? कुछ नहीं, ओके ओके राइट? ओके, दिस इज अ डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट है ये, जो भी एग्जैक्टली, जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये क्वालिटी है इसमें कि इन्होंने ये एग्जैक्टली। किया। बस का एग्जाम्पल हम्म, देख लो, ये बस है, हम्म, ये बस के ढांचे के ऊपर अभी मुझे टाटा के चेसिस के जगह पे मुझे अशोक लेलैंड का चेसिस लगाना है, तो मुझे बस का स्ट्रक्चर भी रीमोडिफाई करना पड़ेगा उस चेसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर यदि मैं इंजन चेंज करता हूं तो इन डब्बों में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नथिंग, इट इज यूजेबल, ये हटाओ, दूसरा इंजन लगाओ, दूसरा क्लाउड लगाओ, चलने लग गया। ओके। सो आज आई अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे, मेरा 100 लोगों एग्जैक्टली, का एक स्टाफ है, मेरा एक एक्टिव डायरेक्टरी 100 यूजर्स का एक मेरे का आईसीटी का एप्लीकेशन है, ओरेकल का, और एक मेरा कोई एप्लीकेशन है जो मेरा एग्जैक्टली, क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, वर्चुअलाइजेशन पे है, और उसको मुझे एजूर से लेके या किसी भी क्लाउड का प्लेटफॉर्म पे जाना है, जस्ट लाइक दैट एडब्ल्यूएस के पास। अगर ये मेरे पास एक कंटेनर वाला सिस्टम है, तो जो भी मुझे ये पूरा इंस्टॉलेशन करना है, वर्चुअलाइजेशन का हटाना, फिर से ये पूरा टेस्टिंग करना है, ट्यूनिंग करना है, जो भी दैट मेरा नीड डाउन नॉट टू टाइम डू है, ये एनीथिंग। मेरा कुछ भी करना नहीं है। वेरी एग्जैक्टली, सिंपल, इट इज यही है लिफ्ट जितना एंड है। शिफ्ट इजीली। तो ओके। ये एक एडवांटेज हुआ, देर आर 100 एडवांटेजेस, 100 एडवांटेजेस आई कैन लिस्ट आउट। तो ये सिंपली आप एक दो मेजर एडवांटेज समझ गए, रेस्ट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ओके, फेयर इनफ। all right ओके। guys, anyone else has got a question here? इसमें ट्रेनिंग में हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो जो कंपनी में है उस Mhm. तरह का एनवायरनमेंट फ्री कर सकते हैं। Of course, it will be everything, this entire training would be on real life scenarios only. ओके। Okay, it will be on real life scenarios. ओके, तो हम सर्विस वाइज नहीं जाएंगे, हम सिनेरियो वाइज फिर सर्विस उसमें कहाँ पे आएगा उस तरह से जाएंगे क्या रिवर्स में? Yeah, this will be everything combined. We will go service wise, we'll go scenario wise, we will go conceptual wise, all everything. आपके जिन वर्किंग में क्या क्या ऐसे चैलेंज सिनेरियो आते हैं जो हम नॉर्मल नहीं सोचते और जो क्लाउड में हमको करने पड़ते हैं, जो नॉर्मली और जो सिलेबस होता है उसमें कवर नहीं होते और फिर हम रियल लर्निंग से सीखते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, thousands of things are there, right? like like आप किसी चीज को, जब एक आर्मी मैन बंदूक चलाना सीखता है तो एक प्री बिल्ट ट्रेनिंग बाउंड्री के अंदर सीखता है, राइट? बंदूक चलाना सीखता है, लेकिन जब लड़ने जाता है तो बंदूक वही होती है, चलाने की टेक्निक वही होती है, लेकिन उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। और कोई भी एक लड़ाई दूसरी लड़ाई के सिमिलर नहीं होती। एवरी डिप्लॉयमेंट इन एवरी कंपनी इज अ यूनिक। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल, मुझे कोई भी हाथ खड़ा करके बताएं कि जैसे मेरी इस कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयड है, ऐसे ही इस कंपनी में है, नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी इज द सेम, टूल इज द सेम, बट एवरी कंपनीज डिप्लॉयमेंट वुड बी अकॉर्डिंग टू दैट कंपनीज बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके,
तो उस तरह से ये जो सर्विसेज क्लाउड पर आप सीखेंगे उसको अलग अलग तरीके की अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट होगा। बट व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द सिनेरियोज, हाउ दैट विल बी डिप्लॉयड, जब हम वो सर्विस वाइज डिस्कस करेंगे, सर्विस वाइज पढ़ेंगे, then I will keep you explaining, okay, this can be done in this scenario this way, this scenario this way, like that. Okay, अभी उसको explain करना quite difficult होगा, but just to understand it's like that. Okay. And one more question, like suppose you already said that हर लड़ाई डिफरेंट है, तो आपने जो हमको तैयारी कराया, मे बी अगर कंपनी में हम किसी में गए तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लड़ाई है, और फिर हम आपको आगे पूछते हैं कि सर हमको हेल्प चाहिए क्योंकि ये तो अलग लड़ाई है थोड़ा, करेक्ट? Right, लड़ाई right, में definitely, वो सिनेरियो। definitely, I'll be there. तो I will be there. I will charge you for that, but I'll be there to help you. ओके। Okay, I'll be there always, lifetime until you are working in a cloud. I will be there. All right, anybody else has got a question? या सर, अभी आपने बताया कि अ, एक सर्विसेज सॉरी एक एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से हम दूसरे इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। पर Right. बट वो माइग्रेशन के लिए कोई टूल यूज होता है, तो उसके लिए भी कोई ये रहता है क्या, लाइसेंसिंग और ये कुछ यूज So होता है क्या उसमें? of course, those tools also are payable tools, but those all are very, very peanut cost tools, guys. Okay, उसके लिए कोई ऐसी huge cost नहीं होती है। राइट, ओके सो आप अज्योर का माइग्रेशन करोगे तो आपके ऑन प्रेमाइस को अज्योर पर लेकर जाओगे तो अज्योर खुद ही वो माइग्रेशन टूल फ्री देगा कि ये मेरे टूल से आप कर लीजिए। राइट। ओके ऐसा है, सो दोस टूल्स आर नॉट अ बिग चंक, बिग चैलेंज। most of the migration tool that cloud provider gives you free, क्योंकि वो तो आपको लाना चाहता है उसके क्लाउड पर, so they will give you all the supports and all the tool, right? ओके। वाइल माइग्रेशन, Mhm. अगर कोई अगर कोई सर्विसेज या किसी इस पर इम्पैक्ट हो सकता होता है क्या, इन कंटेनर ऑल्सो, और एक 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 क्लाउड सर्विसेज से दूसरे क्लाउड सर्विसेज पे माइग्रेट करते वक्त? क्या हो, कम अगेन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर माइग्रेट करते हैं तो क्या होगा? एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर माइग्रेशन करते वक्त किसी सर्विसेज या किसी एप्लीकेशंस को कोई इशू इम्पैक्ट पड़ सकता है यस क्या? यस यस, एग्जैक्टली। इशू जैसे कि आपकी अज्यूम करो कि अज्योर पर आपकी कोई एक सर्विस है, ओके, नेटवर्किंग लोड बैलेंसिंग के लिए एक सर्विस अज्योर पर है, लेकिन वही चीज करने के लिए एडब्ल्यूएस पर वो दूसरी सर्विस है, तो आपको वो दूसरी सर्विस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो आपकी एप्लीकेशन में करने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस, राइट, तो वो तो करना ही पड़ेगा, दैट ऑलवेज शुड बी देयर। but it takes a time also. You previously mentioned that. हाँ, तो टाइम लगेगा ही ना, एक क्लाउड माइग्रेशन पे ले जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा, कंटेनर पे नहीं लगेगा क्योंकि कंटेनर में कुछ डेवलपमेंट नहीं, इट कैरी इट्स ओन डिपेंडेंसी along with it, Okay. right? Punit is saying like, I have attended 3 demo class from different institute, but your way of explanation is very easy. Thanks Punit, thank you very much. My name is Madhav एक Pandey, Punit. हेलो Yes, yes, सर, go एक ahead. क्वेश्चन और था। Mm-hmm. सपोज वी आर टेकिंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास फ्रॉम यू, Mm-hmm. is there any luck you can also cover DevOps after that, not this one? So Yeah. if we want to move, so at least one trainer we will correlate the things now. Rajiv, listen, we are providing at the top level training right from beginning, like scratch, you don't know anything, like we have seen this demo. From there to the big data is the highest certification. So we are top provider in AWS, in Azure, in GCP, in IBM software and Oracle Cloud. 5 cloud technologies we are providing end-to-end all services: infrastructure, network, securities, DevOps, AI,
AI with cloud, everything, whatever you want, we are having that services. And not just new, but we are doing that since year 2013 to 14. So excellent and expert teams always should be there. My personally, I have a special forte. I am into an infrastructure and on cloud network and security. Everything and anything in a cloud security, everything and anything in cloud networking, and everything in cloud infrastructure. I will be with you for end to end. DevOps, yes, I'm a DevOps as well. I know that programs and I work on that, but I'm not an teaching expertise in that because it's required an development expertise on that. So we have a different trainers who are 10 plus year doing the same. So this is how it is. And timing will be the 9, correct? Sorry. Timing. Batch. The class Timing, okay. timing. Timing or many timings are available. Okay, so it's a morning 8 o'clock to evening 9 o'clock. Timings are available. Me personally, I'm a working professional, so my cloud batches would be every evening 9 o'clock like this today, 9 o'clock to 10:30 or sometime 11 o'clock or weekend. I take those two schedules. Okay, great. Preeti Chavan, I like your teaching, sir. Your explanation skills is best. Thank you, Preeti. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Anybody else? Anybody else has got any questions, any queries, guys? I'm open. Ask me anything, whatever you want. I'm here to resolve all of your queries and wonders about cloud. No? That's fine. Okay, Shiva. Fantastic, guys. We will continue this class 5 days, and this 5 days, it's a free class for you guys. You enjoy the training and learning with me. I will try to give you the best possible during this 5 days training program. At least I will make you capable to understand everything, and you will become a friendly and very comfortable with the cloud environment in this next 5 days. Okay, and this next 5 days training will give you enough understanding, enough clarity to think or like how you can make your career brighter in cloud technology, and how you can see a longer goal, like where you want to see yourself in the next 5 years to 10 years. All right. You will have a clear vision within this 5 days. All right. So a part of the technology, a lot of other things like how to choose the right career path in a cloud, how you can pick up the right job, how you can make ready for the demanded jobs, that everything I will try to guide you in this, in the best to best expertise level what I have since last 10 to 15 years teaching experience. Abhishek Bhavsar, since 2018 I am getting lessons from you. Thank you so much. Always happy to listen you. Thank you, Abhishek. Thank you, and great to see you once again in this class. Preeti Chavan, I completed CCN and MCSA. After that, want to do, please guide me. Definitely, Preeti. Ask me your questions. If you want to discuss anything in this open forum, you can ask me, or you want to connect me back one to one and ask questions, you can. I'm putting my WhatsApp number here. Just hold on, everyone. 9922922920. That's my direct WhatsApp number. Anyone can reach me anytime for any of the queries. I would try to help you out. Shailesh here. Yes, Sailesh. It was very nice to see you after 10 years, actually 10 to 12 years. Oh, 10 years Maybe back. Great, 10. great, And Sailesh. I'm Great feeling to like the same when I, first time contacted with you and we learned CCNA, NCSA, everything from you. great, So great. it was very nice to learn from you, and because of you, I'm sitting here and right now I'm handling a data center for RBI Great, right now. wonderful, Sailesh. So Wonderful. all credit goes to you only because you are the Thank you. only the teacher who teach me at the my career beginning time. So thanks Wonderful. a lot for everything.
Great, great. I'm proud of you, Salesh, whatever Yeah, you have thanks, sir. achieved. Thanks. Great, Thanks, sir. great journey. So 10 year back, you're my student, right? Yes, sir. Great, Almost. wonderful, wonderful. Great to see you, Salesh. And long way One to more go. thing, when you talking about Khan sir, that was the same that YouTube Khan sir, or which have tutorial, free tutorial or something else, someone else. Not the same I was giving. My intention was to like मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं उतने इजीली आपको एक डिफिकल्ट चीज एक्सप्लोर कर दूंगा. ओके, क्योंकि ओके मैंने सो भी उनके सीसीएनए के जो जर्मी के वीडियो के बाद उनके ही वीडियो रेफर किए थे सीसीएनए और सीसीएनपी के लिए, तो मुझे ओके. वो थोड़ा याद है खान No, सर. no, no. That is that the tuition class Khan sir wo UP के. That is the one. Okay, now Manikandan, thank you sir for your explanations, everything in simple way. Thanks Manikandan Ravi. It's my pleasure. How to, Saurabh Patil is saying how to get recording to learn. That you will get it. Okay. So I will provide you recording, guys. Maybe tomorrow, or once that 5 days session is completed, I will keep that recording on one common share place, and everyone can take it from there. All right. So anyone has a question, or shall we wind up for the day and see you tomorrow with the next new topic? Sir, एक sound दे दो ना. Hello. Arinan, yeah, go ahead, please. Yes, sir. I have one question. Mhm. That अगर improvisation हम यूज करते हैं आपका सर्वर के ऊपर, तो सर एक सर्वर के ऊपर क्या AWS, Azure ये सब एक साथ यूज किया जा सकता है? एक सर्वर पर क्यों यूज करोगे आप? सर्वर तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. Azure AWS इज इन क्लाउड. हाँ, क्लाउड का जो सर सिस्टम है ये तो आपका हाँ हाँ, कोई अच्छा, डेटा. एक ही सिस्टम से आप मल्टीपल क्लाउड एक्सेस कर सकते हो. ओके, यू कैन एक्सेस मल्टीपल क्लाउड्स फ्रॉम सिंगल सिस्टम. ओके, great, wonderful, guys. So it was great talking to you and having this wonderful sessions with you guys. Thank you very much for joining, and see you tomorrow again at sharp 9 o'clock. Thank you, and take care. Good night.